Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello and welcome to the course on differential geometry. Let me introduce myself. My name is Sohail Iqbal and I did my PhD from University of Warwick, UK. Before my PhD, I was a student at Qaid-e-Azam University, Islamabad. I did my MPhil and MSc from there. And in my MPhil research, I was interested in the relation between groups and graphs. So let's get started with the group. The course code of the subject is MTH352. In this course, we are basically interested in studying the geometry. And now you may ask, why geometry? इंसान ने अपने इर्तिका के अवाइल से ही अपने गिरदो नवाह में ज्योमेट्री और डिफरेंट शेप्स को अंडरस्टैंड करना, उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था. इस सिलसिले में जो सबसे पहला रिटन काम मिलता है वो यूक्लिड का है, जिसको हम अक्लीदस के नाम से भी जानते हैं. उसने अपने से पहले तमाम मैथमेटिशियन, तमाम साइंटिस्ट उनके काम को इकट्ठा करके वॉल्यूम्स की शेप दी, बुक शेप दी. उनको आज भी हम यूक्लिड एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज से 2-3 सदी पहले तक इसको एज ए टेक्स्ट बुक पढ़ाया जाता था. वो काम जो यूक्लिड ने आज से 23-24 सदी पहले किया था, इन 300 BC टू बी एग्जैक्ट. इसीलिए उसकी इस कंट्रीब्यूशन की वजह से उसको हम फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से भी जानते हैं. दूसरा नाम जो हमारे जहन में आता है वो है आर्किमिडीज, या जिसको हम अर्शिमीदेस के नाम से भी जानते हैं. उसने अपने गिरदो नवाह में ज्योमेट्री और डिफरेंट शेप्स को ना सिर्फ अंडरस्टैंड किया, बल्कि फॉर एग्जांपल उसने स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट किया और उसने मुख्तलिफ वॉल्यूम्स को आपस में उनका रिलेशनशिप भी फाइंड आउट किया. And he understood geometry in such a way that once he said that give me a place to stand and I will move the earth. Next हमारे पास है Muslim era. So we know that Muslims are always interested in finding the position of the moon. जो इस्लामी साल हैं वो position of moon पे depend कर रहे होते हैं. So they are always interested in finding the position of the moon. And that's why they understood the geometry of the celestial objects. They understood the geometry of the moon, and they understood the geometry of the sun and other stars. And this developed the subject more. And then the next major breakthrough in the history of the geometry when René Descartes introduced the Cartesian coordinates. And it is also said that the same thing was discovered by Pierre de Fermat. So we can just say that these coordinates were invented by both of these mathematicians independently. And in fact, what he did was, given any point in the plane, you can associate two numbers or one ordered pair with that number. So for example, if I have a point in space, then I can draw these axes, these x-axis and y-axis, in such a way that I can give two numbers. So in this case, the number is 2 and 5. So this point, I can tell the position of this point by these two numbers, 2 and 5. Similarly, if I have some other point, for example this point in space, then I can tell the position of this point in space by these two numbers, which is 7 and 7. So once we know the relationship between this plane and numbers, then we can associate geometric objects with the equations. So for example, in this picture, this is graph of some equation. So in more detail, if you have an equation y is equal to x square, then you can draw the graph of this equation. In other words, you can associate a geometrical object to this equation. So just a quick reminder, how do we do that? So you can choose some real numbers. Let's say in this case
I choose 0, 1, -1, 2 and -2, and then we calculate their images under this function, under this equation, and the images are 0, 1, -1, 4 and 4. So in other words, the image of 0 is 0, the image of 1 is 1, the image of -1 is -1, image of 2 is 4, and image of -2 is also 4. And next step is to sketch these numbers. So this pair 0, 0 associated to a point in the plane, and it is this point. Similarly, the next ordered pair is associated to this number on the graph, and -1, 1 is associated to this point on the graph. 2, 4 is associated to this point on the graph, and lastly -2, 4 is associated to this number on the graph. And then we join these points in space to get this curve in the plane. On the same lines, we can associate order triple or 3 numbers to any point in the space in the following way. Now you give 3 axes, x-axis, y-axis and z-axis. So using these coordinates in 3-dimensional space, we can associate any point. We can associate any point with 3 numbers. Similar to the graphs in 2-dimensional space, we can associate geometrical objects in 3-dimensional space with equations. So for example, some set of equations corresponds to this curve in 3-dimensional space, and on the other hand, some equation corresponds to this surface in 3-dimensional space. Now, what is the aim of this course? The aim of this course is to review some differential calculus. So as I said, we are studying geometry using tools from calculus and linear algebra. So we are going to review some tools from differential calculus in our first discussion. And then we will develop some new tools to study the curves and surfaces in space. And then we will define surfaces mathematically. We will give proper mathematical definition of surfaces. And the next thing will be how to do calculus on surfaces. Now you may ask, what does it mean to do calculus on surfaces? So for example, we have seen how to sketch graph of an equation in plane, and we have also seen that how to integrate equations in plane, and we also know that how to take derivatives of equations of one variable. So we know how to do calculus in plane. Now what does it mean to do calculus on surfaces? So for example, if I have a curve in plane, it's a planar curve, I can differentiate this curve, I can take integral of this curve. Can I do the same thing for the curve on this bended surface? Is it possible? And the answer to the question is yes, we can do that. And that is what this course is all about. We will be studying how to do calculus on surfaces. And then at the end, we will be studying a detailed geometry of the surfaces. We will study how to calculate the curvature of the surfaces, how to differentiate two surfaces mathematically. Now, why study surfaces? So as I said, there are many surfaces around us, and we want to study the calculus on surfaces. And what are the major reasons to do this? So for example, our Earth is a surface itself. It's not a flat plane. It's a surface. It's a curved surface. And what will happen
if there is some curve on planet Earth. So I need to know how to integrate this curve. I need to know how to differentiate this curve, because it may be some road on the Earth. So I need to find out its value. It may be a road on planet Earth. So I need to study this thing. I need to study the length of this curve. I need to study the bending of this curve. And second most important reason why we studied surfaces is the shape of the space. The shape of the space due to the gravity. So what is this shape? So the idea behind this shape of the space is, let's say in the center we have sun, and around there is this planet Earth. Now the idea behind this is, due to sun, it's just like, you have a sheet and you have some heavy object in the middle. So there is a bending in the sheet, and the Earth moves around the sun due to this bending. So it's very simple. If you take some object, let's say another ball, and you throw it in a very fast way, then it will keep moving in circles around this. And in practical situation, it will at the end drop inside, but it does not happen with the Earth because there is no friction in space. So that's why we are interested in surfaces. They are all around us and they are the most important objects. So the textbook for the course is Elementary Differential Geometry by Barrett O'Neill. And the marking scheme is, there will be 10% marks for the quizzes, 10% for the assignments, and 5% for GDB, and 25% for Sessional 1 and Sessional 2 altogether. And then the final will be for 50 marks. So we will start from some basic definitions. Let's start from the definition of the set, the most fundamental object in mathematics. So what is a set? It's a collection of objects, and these objects are called elements of the set. So for example, the set of natural numbers 1, 2, 3, 4 up to so on, it's a set. Also, set of all integers which are divisible by 2, it's also a set, and we know them as set of integers. Next definition is, what is a subset? A set A is subset of S provided each element of A is also an element of S. So for example, if I have a set A which is equal to 1 to 3, then this set is a subset of set of natural numbers. And similarly, the set we just defined above, which is the set of even integers, is a subset of integers, because every even integer is also an integer. The next most important object while we are studying this subject is, what is a function? A function is basically associating elements from one set to the elements of the second set. So for example, properly a function from set D to R is a rule with the help of which each element of D is assigned to a unique element of R. So what does these names mean? Each element of D is assigned to a unique element of R. So it means that if, for example, if I have D is equal to A, B, C, 3 elements, and if R is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, then a function from D to R would be which is assigning each element of D. So each element of D must have some image. D के हर element R के किसी ना किसी element से associated होना चाहिए. So इस case में the image of A is 1, the image of B is 2, the image of C is 5. So it's an example of a function. Now on the other hand, in this case, each element of D is assigned. So A is assigned to 1, B is assigned to 2, B is assigned to 3, and C is assigned to 4. But this is not a function, because the element B is assigned to
two different elements and it's not assigned to a unique element of R. So that's what the word means, unique element of R. So each element of D is assigned to a unique element of R. This is right, but this is wrong. This is not an example of a function. The set D, we also call this set as the domain of the function. And the set R is also called the range of the function. So what does image mean? For x belongs to D, f of x is called the image of x under F. And similarly, set of all elements of R, which are images of elements of D, is called the image set of the function. So for example, if I have a function f from R to R, which is defined as f of x is equal to 1 plus x, then the image of f in this case is R. So why the image of f is equal to R? Because corresponding to every element of this range R, there exists an element such that the image of that element under f is equal to R. So that's why the image of f is equal to R. Next we have how to take composition of two functions. So if I have a function f from set D to set R, and if I have another function g from set E to set S, then we can compose these two functions. लेकिन हम हर दो functions को compose नहीं कर सकते. इसमें ये जो condition है g of E must be contained in D, ये satisfy होनी चाहिए. ये condition हम क्यों require कर रहे हैं? क्योंकि by the definition of composition of two functions, f circle g, ये condition हम क्यों require कर रहे हैं? Because by definition of composition of two function, f circle g is equal to f of g of x. So basically we are applying f on the image values of g. So the image values must be contained in the domain of D. क्योंकि functional value आप तभी find out कर सकते हैं अगर वो value उसकी domain में होगी. अगर g of x f की domain में होगा तभी आप ये composition calculate कर सकते हैं. For example, अगर आपके पास function f of x है 1 plus x and you have another function g of x is equal to x square, then their composition f circle g is given as f of g of x. Now what is g of x? G of x is equal to x square. So this becomes f of x square. और what is f of x square? ये बिल्कुल ऐसा ही है. अगर f of x is equal to 1 plus x है तो आप इस x को replace कर दें x square के साथ. So this is equal to 1 plus x square. So this is composition of the function f and g. Now next we define what are one-to-one functions, and the next we define what is a one-to-one function. A function f from D to R is called a one-to-one function if f of x equals f of y implies x is equal to y. For example, if you have a function from set A to set B where set A is equal to 1, 2, 3, 4 and set B equals A, B, C, D, then one example of a one-to-one function from set A to set B is given as, इसमें एक का जो इमेज है B है, 2 का इमेज C है, 3 का इमेज A है और 4 का इमेज D है. ये one-to-one फंक्शन है क्योंकि B का हर एलिमेंट A के सिर्फ एक एलिमेंट का इमेज है. ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास कुछ ऐसा फंक्शन है जिसमें A is mapping to B, 2 is mapping to D, 3 is mapping to A and 4 is mapping to D, it is not a one-to-one function. ये क्यों one-to-one function नहीं है? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट D है ये दो एलिमेंट्स का इमेज है 2 and 4. इस वजह से this is not an one-to-one function. Another example is f of x equals 1 plus x. It is a one-to-one function क्योंकि if f of x equals f of y, which implies 1 plus x equals 1 plus y, इसमें अगर आप 1 दोनों साइड से कैंसिल कर दें, so this implies x is equal to y. So f of x equals f of y implies x is equal to y. इसका ये मतलब है f of x equals 1 plus x is a one-to-one function.
Now what is an onto function? A function f from a to b is called an onto function if f of a is equal to b, which means जो image values हैं f की वो तमाम की तमाम set b के बराबर हैं. In other words, b का हर element a के किसी ना किसी element का image है under f. So for example, in this case, if f is a function from a to b and the set a is 1 2 3 4 and the set b is a b c d, इस केस में अगर हम इन एलिमेंट्स को इस तरीके से एसोसिएट करें कि 1 का इमेज b है, 2 का d है, 3 का a है और 4 का c है. इसमें देखें कि b का हर एलिमेंट a के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है. a is an image of 3, b is an image of 1, c is an image of 4 and d is an image of 2. So every element of b is an image of some element of a. So it is an onto function. The range of the function is equal to image of the function. For any function, we can define inverse of a function, but we can't do it for every function. If a function is one-to-one and onto, then the inverse of f exists. और इस inverse को हम denote करते हैं f उसकी power में -1, f inverse, and it's a function obviously from r to d. और इसको define कैसे करते हैं? A function f inverse from r to d is defined as y going to x, where y is equal to f of x. And this function is well defined because the function f is onto function. So every element of r has some image. क्योंकि r का हर element f के किसी ना किसी element का image है, since it's an onto function. So this means every element of r has a value under this map f inverse, and it's a unique value because it is one-to-one function. In other words, we can also define inverse of a function in the following way. G is inverse of f if f circle g equals g circle f is equal to identity element. अगर एक ऐसा function exist करे g such that its composition with f from both sides is identity. So for example, if I have a function 1 plus x and if I have a function x minus 1, then g is basically inverse of f. So we can see how. So what is f circle g of x? So this is equal to f of g of x. Now what is g of x? G of x is equal to x minus 1, and this is equal to 1 plus x minus 1, which is equal to x, which is an identity function. Similarly, we can see that g circle f is also identity. So g is inverse of f. We can also say that f is inverse of g, and in general we can say that they are inverses of each other. Next हमारे पास है definition of Euclidean space. A Euclidean space is basically set of all ordered triples of real numbers. Such a triple is called point of R3 or point of the Euclidean space. So for example, in this picture, this point P is basically an ordered triple, and this is in fact a point in the space. और हमने देखा था अभी definition of Cartesian coordinates में कि हमने space में किसी भी point को associate कर दिया एक ordered triple से, 3 नंबरों से. So इस case में ये जो point है इसको हमने associate कर दिया 3 नंबरों से, 2, 2 and 2. Similarly, we can do it for any point in the space. We can do it for any point in the space. Take any point in the space, there will be an ordered triple associated to that point. Or collection of such points is called Euclidean space. So basically आप ये कर रहे हैं, आप जितनी भी space में जितने भी आपके points हैं, उन points को आपने
उनके जो ऑर्डर ट्रिपल्स हैं उनको एक सेट में राइट डाउन कर दिया, और उस सेट को आप ये कह रहे हैं कि ये यूक्लिडियन 3 स्पेस है। Now what are the properties of Euclidean space? अगर मेरे पास कोई से दो पॉइंट हैं P and Q, I can add these 2 points P plus Q. जस्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऐड कर दें, सेकंड को सेकंड में, और थर्ड को थर्ड में ऐड कर दें, और आपके पास आ जाएगा addition of the 2 points in the Euclidean space. So remember, Euclidean space क्या है? It's a collection of ordered triples. सिमिलरली अगर मेरे पास कोई सा पॉइंट P है और कोई सा स्केलर है अल्फा, सो स्केलर मतलब कोई सा रियल नंबर है, वी कैन मल्टीप्लाई स्केलर विद दिस पॉइंट, और इसके जो कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स है इससे मल्टीप्लाई कर दें अल्फा को, एंड वी विल गेट स्केलर मल्टीपल ऑफ ए पॉइंट. द पॉइंट, देयर इज अ स्पेशल पॉइंट ऑरिजिन, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0 0 0. In general, R3 is a vector space. This collection of ordered triples which corresponds to the points in the space, this collection is a vector space. Now, what is a vector space? So before doing the definition of vector space, we need to know what is a field. So before doing the definition of vector space, we need to know what is a field. So a field is a set with 2 operations defined on it, and these 2 operations must satisfy certain properties. इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर मैं कोई से 2 एलिमेंट्स लूं फील्ड के, उनको मैं ऐड करूं तो मेरे पास अगेन f का एलिमेंट आना चाहिए. सिमिलरली अगर मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वंस अगेन एक एलिमेंट f का आना चाहिए. द सेकंड प्रॉपर्टी जो ये सेटिस्फाई करना चाहिए वो ये है कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा करूं, इसमें बीटा प्लस गैमा को पहले ऐड करूं और फिर उसको बाद में अल्फा में ऐड करूं, या मैं पहले अल्फा प्लस बीटा ऐड करूं और बाद में गैमा ऐड करूं, it does not make any difference. Now what is the use of this property? इसका ये मतलब है अगर मैं ये लिखूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, तो इसका मतलब है मुझे ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मैं पहले अल्फा प्लस बीटा को ऐड करूं या बीटा प्लस गैमा को ऐड करूं. कोई सा भी मैं ऑपरेशन पहले कर लूं, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा. ये चीज इस चीज को मेक श्योर कर रही है ये प्रॉपर्टी. इसी तरीके से मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस डेल्टा अप टू सो ऑन इन तमाम नंबर्स को लिख सकता हूं विदाउट ब्रैकेट्स. तो मैं ब्रैकेट्स को अवॉइड कर सकता हूं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. सिमिलरली ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर द सेकंड ऑपरेशन विच इज मल्टीप्लिकेशन, और द सेम कॉन्सिक्वेंसेस इस केस में भी अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो हम ब्रैकेट्स के बगैर नंबर लिख सकते हैं. मैं अल्फा बीटा गैमा को ऐसे लिख सकता हूँ, और इसमें मुझे इस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पहले अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करूँ या पहले मैं बीटा और गैमा को मल्टीप्लाई करूँ. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट दिस सेट मस्ट सेटिस्फाई इन ऑर्डर टू बी अ फील्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. So what is additive identity? एक नंबर 0 such that कि मैं इसमें फील्ड का कोई सा भी एलिमेंट ऐड करूं किसी भी तरीके से, अल्फा प्लस 0 करूं या 0 प्लस अल्फा करूं, आंसर मेरे पास हमेशा सेम आएगा. और मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए सच दैट अगर मैं किसी भी नंबर को इससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर अल्फा आना चाहिए. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करने चाहिए. सो व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? अगर अल्फा कोई सा एलिमेंट है तो माइनस अल्फा इज द एडिटिव इनवर्स सच दैट अगर मैं माइनस अल्फा को अल्फा में ऐड करूं या माइनस अल्फा को अल्फा में दूसरी साइड से ऐड करूं तो मेरे पास आंसर हमेशा 0 आएगा. सिमिलरली फॉर एनी नॉन जीरो एलिमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, फॉर एनी नॉन जीरो एलिमेंट
एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको हम अल्फा रेज़ टू पावर -1 से डिनोट करते हैं, और अल्फा इंटू अल्फा -1 इनका मल्टीप्लिकेशन मेरे पास आइडेंटिटी आनी चाहिए। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, इन दोनों ऑपरेशंस को हम आपस में रिलेट कर रहे हैं। ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन है और ये आपके पास एडिशन है, और ये आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। सो अल्फा इंटू बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गैमा। सो द मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। सो अगर ये तमाम प्रॉपर्टीज अगर कोई स्ट्रक्चर सेटिस्फाई कर दे तो हम उसको कहते हैं इट्स ए फील्ड। नाउ हमें बहुत सी एग्जांपल्स ऑलरेडी पता है फील्ड की। फॉर एग्जांपल हमें बहुत सी एग्जांपल्स ऑलरेडी पता है फील्ड की। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ रियल नंबर्स इज ए फील्ड। सो व्हाई दिस इज ए फील्ड? क्योंकि इसमें एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है। अंडर दिस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दिस सेट इज ए फील्ड, क्योंकि इसमें कोई से दो एलिमेंट्स में अगर ऐड करूं तो मेरे पास एलिमेंट हमेशा रियल नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई डू 1 + 2 then I always get a number 3 which is a real number again. कोई से दो और रियल नंबर ले लूं, 3 + 2 it's 5 which is again a real number. So set of real number is closed under addition. Similarly अगर मैं कोई से 3 नंबर लूं then a + b + c is the same as a + b + c. और इसकी एग्जाम्पल है, अगर मैं 1 + 2 + 3 करूं इट्स द सेम एज 1 + 2 एंड +3। 1 + 2 + 3 पहले कर रहे हैं हम, विच इज़ 5 इज इक्वल टू 3 + 3। इसमें 1 + 2 को पहले कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू 6 = 6। सो एसोसिएटिविटी इन जनरल होल्ड कर रही है सेट ऑफ रियल नंबर पे। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। We know that in general numbers satisfy the associativity. The next property is commutativity. हमें यह भी पता है अगर मैं कोई से दो नंबर को ऐड करूं तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल 2 + 3 = 3 + 2। कोई से दो रियल नंबर्स को मैं ऐड करना चाहूं तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज we must have additive identity. So इसमें 0 exist करता है, 0 belongs to R such that 0 + a is equal to a + 0 is equal to a. और ये हमें पता है किसी भी नंबर में मैं 0 ऐड करूं तो मेरे पास वही नंबर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है if a is any real number then -a belongs to R such that a plus -a is equal to -a plus a is equal to 0. For example अगर मैं 2 ले लूं then there exists -2 such that 2 plus -2 is equal to 0. So set of real number satisfied these 5 properties for addition. लेकिन अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो आपने वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन के लिए भी प्रूव करनी है। सो लेट्स सी। वी हैव आर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर ये सेटिस्फाई करेगा फॉर मल्टीप्लिकेशन द सेम प्रॉपर्टीज देन इट विल बी ए फील्ड। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर मैं कोई से दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास हमेशा एक रियल नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल 2 × 3 is equal to 6 which is again a real number. Similarly 3 × 5 is 15 which is again a real number. So the multiplication is closed under multiplication. So R is closed under multiplication. The next property is associativity. कोई से भी 3 रियल नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ then I can do it in any order I want.
Similarly, let's see an example. 2 into 3 into 5 is the same as 2 into 3 into 5. And this holds for each and every triplet of real numbers. The next property is A into B must be equal to B into A. And we know that this is also true because 2 into 3 is always equal to 2 into 3, and up to so on. We can do that. We can in fact see that this holds for each and every pair A and B of real numbers. And the next property is identity element. There exists 1 belongs to R such that 1 into A is equal to A, which is 1 A into 1. So for example, 2 into 1 is 2. And the last property is for any A belongs to R. और अगर आपको याद हो तो हमने A पे कंडीशन इम्पोज की थी, A must not be equal to 0. There exists 1 over A belonging to R such that A into 1 over A is equal to 1. So for example, अगर आपके पास real number 3 है, then there exists 1 over 3 such that 3 into 1 over 3 is equal to identity. And last property जो हमने require की थी for a set to be a field is it must satisfy the distributive laws. A plus B plus C must be equal to A into B plus A into C. और हम देख सकते हैं कि this holds trivially for set of real numbers. अगर मैं कोई से 3 real number ले लूँ, 2 plus 3 into 4 is equal to 2 into 4 plus 4 into 3. So इससे हमें ये पता चला set of real numbers is a field. Similarly, we can do other examples as well. So set Z5 is a field. So this is modulo classes of integers when we divide it by 5. And once we know the definition of the field, we can define what is a vector space. A vector space over a field F is a set satisfying certain conditions. It must be closed under addition and scalar multiplication, which means अगर मेरे पास कोई से दो elements vector space के हैं, उनकी addition V में होनी चाहिए दोबारा. And similarly, if I have a scalar alpha and a vector V, then alpha into V must be in vector space. Similarly, if alpha is a scalar and V is an element of the set capital V, then their multiplication must also be an element of V. Next हमारे पास जो property है वो associativity of addition. अगर मैं 3 elements set V के ले लूँ, then they must satisfy this property. और हमने देख लिया है इस property की क्या importance है. इसमें हमें brackets की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जब भी मैंने numbers को add करना होगा, मुझे brackets की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Next, this addition on the set V must be commutative. V plus U must be equal to U plus V. And the next is existence of identity element with respect to addition. And the next is existence of identity element with respect to addition. So we have 0 belongs to V such that V plus 0 is equal to 0 plus V is equal to V. तो ये condition भी satisfy होनी चाहिए अगर आप इस set V को vector space बनाना चाह रहे हैं. And next is हमारे पास inverse elements with respect to addition. अगर कोई सा भी मेरे पास element V है, then there must exist an element minus V such that V plus minus V is equal to minus V plus V is equal to 0. और जो next property है वो relate कर रही है scalar multiplication और addition को. Scalar multiplication और addition को ये आपस में relate करेगी. अगर मैं कोई scalar element ले लूँ, element of the field alpha ले लूँ, और U और V element of the set V ले लूँ, then alpha into U plus V must be equal to alpha into U plus alpha into V.
and similarly it must also be distributed from the other side on the set of fields. So अगर मेरे पास कोई से दो elements है alpha और beta of the field, then alpha plus beta into V must be equal to alpha into V plus beta into V. Next हमारे पास है compatibility of scalar multiplication with field multiplication. So which means alpha into beta into V must be equal to alpha into beta and then into V. And last जो property इस set को satisfy करनी चाहिए ताकि ये vector space बन जाए वो ये है 1 into V must be equal to V. Now this 1 is basically the multiplicative identity of the field and this V is basically any vector of the set V. So if all of these conditions are satisfied, then we can say that V is a vector space. And I'm sure we have seen many examples of the vector space. So for example, if I take V is equal to R2, then it is a vector space. So we know that what is R2? R2 is basically is a set of ordered pairs such that X and Y belongs to set of real numbers. Now in this set, how do we define addition? So if I take any two elements P and Q belonging to R2 such that P is equal to X1 X2 and Q is equal to Y1 Y2, then we define P plus Q is equal to X1 plus Y1 X2 plus Y2. And under this addition and scalar multiplication, so for any alpha in set of real numbers, alpha into P is defined as alpha x1, alpha x2. So under this addition and scalar multiplication, we can easily see that this set R2, this set R2 is a vector space. And similarly, we can find many examples of vector spaces. We can prove that R3 is a vector space, up to so on, and in general we can see that Rn, the Euclidean space of dimension n, is a vector space. Now in Euclidean space, I can define three real valued functions x, y and z such that for any element P of the Euclidean space R3, x of P is equal to P1, y of P is equal to P2 and z of P is equal to P3. जो फंक्शन x है, अगर किसी भी पॉइंट पे आप अप्लाई करें तो उसका x कोऑर्डिनेट देगा. अगर किसी भी एलिमेंट पे y अप्लाई करें तो उसका y कोऑर्डिनेट आएगा, और किसी भी एलिमेंट p पे z अप्लाई करें तो आपके पास उसका z कोऑर्डिनेट आएगा. सो इट्स ए रियल वैल्यूड फंक्शन. इसकी जो वैल्यूज आ रही हैं ये रियल नंबर्स हैं. p1, p2, p3 आर रियल नंबर्स. सो वी कैन आल्सो यूज द फॉलोइंग नोटेशन. अगर मैं x1 से डिनोट करूं फंक्शन x को, x2 से डिनोट करूं फंक्शन y को, और x3 से डिनोट करूं फंक्शन z को, then any point p can be written as, any point p which is p1, p2, p3 can be written as x1 of p, x2 of p and x3 of p, because x1 of p is equal to p1, x2 of p is equal to p2, x3 of p is equal to p3. And the next definition is, so as I said earlier कि हम differential calculus को review कर रहे होंगे क्योंकि हमने इन tools को आगे जाके use करना है to study the geometry, to study the geometry of surfaces, to study geometry of curves, to study geometry in general. तो सबसे पहली जो definition है differential calculus की जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है differentiable function or C infinity function or smooth function or infinitely differentiable function. So these are all names of the same function. So these are all names of the same property. So a function is differentiable provided all partial derivatives of f of all orders exist and are continuous.
So what does this mean? अगर मेरे पास कोई सा भी फंक्शन f है from R2 to R defined in the following way, f of x y is equal to x square y, then this is a differentiable function. And how can we prove that? So let's calculate partial f by partial x. So we know that what is partial derivative of f with respect to x? It's the derivative of f with respect to x by taking or by keeping the variable y constant. हम इस वेरिएबल y को बिल्कुल ऐसे ट्रीट कर रहे होंगे जैसे ये एक कांस्टेंट है. सो व्हाट इज पार्शियल f बाय पार्शियल x देन? हमने x का डेरिवेटिव लेना, सो इट इज 2x, और जो y है वो कांस्टेंट की तरह इसके साथ आ जाएगा. और अगर कोई कंफ्यूजन आ रही है तो मैं वन वेरिएबल का केस ले लेता हूं. y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. व्हाट इज dy बाय dx? इसमें 2 इज ए कांस्टेंट, तो आप इस 2 को वैसे ही लिख देंगे और x स्क्वायर का डेरिवेटिव आप 2x लिखेंगे. सो यही आपने यहां किया बाय कीपिंग y कांस्टेंट. सिमिलरली पार्शियल f बाय पार्शियल y विच इज इक्वल टू x स्क्वायर. और इस केस में आपने क्या किया? x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया और विद रिस्पेक्ट टू y आपने डेरिवेटिव लिया और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y इज 1 और ये इसके साथ आ गया. Similarly, what is partial f by partial x square? It is equal to 2y. What is partial f by partial y square? It's equal to 0. Okay. And what is partial f by partial x partial y? This is equal to, in fact, partial by partial x of partial f by partial y, which is equal to partial by partial x of partial f by partial y is x square. So this is equal to 2x. And we can see that partial f by partial x is a polynomial in two variables. और polynomials हमें पता है ये तमाम के तमाम हमेशा continuous होते हैं. partial f by partial y एक polynomial है once again, और ये भी continuous होगा. partial f by partial x square is equal to 2y, another polynomial, so continuous. Partial f by partial y square, 0, always continuous. Partial square f by partial x partial y is equal to 2x, always continuous. And similarly we can see all of the partial derivatives of this function are continuous. इसलिए हम कहते हैं कि ये जो function है इस केस में f belongs to C infinity. It's a smooth function. So this function f from R2 to R defined as f is equal to x square y is a smooth function, is a C infinity function, it's infinitely differentiable function or differentiable function. अगर मेरे पास कोई से भी दो real valued function है then I can add them. So how do we add them? अगर कोई सा function f है और g है किसी भी point p पे, then f plus g of p is equal to f of p plus g of p. Similarly, I can multiply the two function as well, f of p, g of p. So for example, अगर मेरे पास function f is equal to x square y है और g is equal to y sin z है, then we can find f into g square. So f into g square of a point x, y, z is equal to f of x, y, z and multiplied by g of x, y, z into g of x, y, z. So what is f of x, y, z? It is x square y. What is g of x, y, z? It is y sin z. And what is g of x, y, z? Again y sin z. और अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई हम कर लें x y cube sin square z, it's the multiplication, it's f into g square. So that's how we multiply two functions. Before going to the next question, we need to know what is a chain rule. Now if I have a function g which is differentiable, and if I have another function f which is differentiable at g of x,
then the composition of the two function is differentiable at x. Moreover, if y is equal to f of g of x is equal to, moreover, if y is equal to f of g of x and u is equal to g of x, then dy by dx is equal to dy by du into du by dx. In other words, y is a function of g of x and g of x is a function of x. So y indirectly is a function of x. So we should be able to calculate the rate of change of y with respect to x, because y is depending on x. So what is dy by dx? By using this rule, we can calculate that dy by dx is equal to dy by du, so rate of change of y with respect to u, and multiplied by rate of change of u with respect to x. So for example, if you have a function y is equal to cosine x cube, so first we can write down this function as a composition of two functions. So for example, if I take u is equal to x cube and y is equal to cosine u, then y is composition of these two functions. So what is dy by du? Is equal to minus sine u, and what is du by dx is equal to 3x square. So we can easily calculate what is dy by dx, which is equal to dy by du, which is minus sine u, and du by dx is 3x square. So this is equal to minus 3x square sine x cube. So that's how we can apply chain rule to calculate derivatives of complicated functions. Now we have the next question. If f is equal to x square y, then what is partial by partial y of sine f? So let's try to find out what is partial by partial y of sine f. So we are going to use the chain rule, और मैं इस दफ़ा डिटेल्ड में नहीं जाऊंगा, मैं आपको जो शॉर्टकट है जो हमने अभी देखा ये वाला, मैं इस चीज़ को अप्लाई करूंगा. इसमें derivative of f by taking g of x as a variable and the derivative of g of x, whatever is inside. इसमें f का डेरिवेटिव लेंगे और g of x को as it is लिख देंगे और फिर g of x का डेरिवेटिव लेंगे. इसको हम आउटसाइड इनसाइड रूल भी कह सकते हैं. सो f of g of x लिखा हुआ है. सो सबसे पहले आप आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लें f of g of x, f prime of g of x, और फिर इनसाइड जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लें which is g prime of x. So let's try to apply this rule, outside inside rule. So partial by partial y of sine x square y. हमने डेरिवेटिव लेना है साइन ऑफ x स्क्वायर y का विद रिस्पेक्ट टू y, और ये कोई आम डेरिवेटिव नहीं है, इट्स ए पार्शियल डेरिवेटिव. और जैसा कि मैंने पहले कहा था, if we are taking derivative of a function with respect to a variable and if it's a partial derivative, तो इसमें जितने भी तमाम कांस्टेंट्स, तो इसमें जितने भी बाकी वेरिएबल्स हैं उनको आप एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे. सो फॉर एग्जांपल इसमें x को आप एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे. सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन? सो व्हाटएवर इज इनसाइड ये हम इसको वैसे ही लिख देंगे. सो डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कोसाइन, और इसके अंदर जो भी एंगल की जगह एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो हमने वैसे ही लिख दिया. दैट्स द डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन. सिमिलरली व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन? नाउ inside function is x square y, and what is the partial derivative of x square y? So cosine x square y, partial by partial y of x square y. Once again x square is a constant and y is a variable, so the derivative is x square. So that's how we calculate the partial derivatives of complicated functions using chain rule. So that was the end of our lecture. इस लेक्चर में हमने क्या किया? हमने ये देखा कि हम ज्योमेट्री को क्यों स्टडी करना चाहते हैं. Why this is important to study geometry. हमने इर्द गिर्द में एग्जाम्पल्स देखी,
हमारे इर्द गिर्द बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिसमें हम ज्योमेट्री को यूज़ करते हैं उनको स्टडी करने के लिए। हम अपने प्लैनेट अर्थ को स्टडी करते हैं, इसकी ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करते हैं यूजिंग दिस सब्जेक्ट ऑफ ज्योमेट्री। हमने देखा कि ग्रेविटी इवन उसमें भी सर्फेसेस इन्वॉल्व हैं। उसके बाद हमने हिस्ट्री के बारे में देखा कि किस मैथमेटिशियन ने, किस साइंटिस्ट ने और किस दौर में इनके ऊपर काम हुआ। उसके बाद हमने कोर्स आउटलाइन देखने के बाद ये देखा कि हमने डिफरेंशियल कैलकुलस या डेरिवेटिव्स यूज़ करने हैं, तो हमने उसके लिए कुछ डेफिनेशंस की और कुछ क्वेश्चंस किए। अगले लेक्चर में हम डिफरेंशियल कैलकुलस को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें जो और ज़्यादा टूल्स हैं, जो और ज़्यादा डेफिनेशंस हैं, उनको रिवाइज करेंगे ताकि हम आगे ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करने में उनको यूज़ कर सकें।